So let's start. I think I want to share my screen. Hope it's visible to you. So for today, I think the broad topics will be this. We'll try and understand how we can combine fundamental investing with technical investing to uh, place our trades, to do position sizing, to build a lot of conviction in what we trade and how we trade, right? And so I'll not be talking about the fundamental aspects in this uh, sort of 1.5 hour video, because that would be I mean that's not enough time to cover fundamentals. But the idea was to sort of look at very good companies from a technical point of view and evaluate how we can decide on taking an entry and exit in these fundamentally good companies. The way I think about it, the fundamental thought of investment and the technical thought of investment are sort of very different ways of looking at how you invest. Both of them are right. And typically, these two groups don't go along well. So the fundamental guys say that, you shouldn't do technical investing, or technical investing hasn't worked for them. And the technical guys say that, we don't look at fundamentals at all. All we do is look at charts, right? So these two sort of groups don't go along together. But if you can bring them together, it's almost like a superpower. And this is how I think about it. You don't have to really criticize the other party of not thinking like you, but if you can bring the good things from fundamental and mix it with the good things from technical, and if you are able to sort of manage your thought process in a way that you are able to think both ways from a fundamental plus a technical point of view, then it is almost like a superpower. I mean, the kind of money that you can make with this approach is just amazing. I mean, over a 15, 20, 25 years period, there's a lot of wealth that can be created if you sort of manage your mind well and try and, mix, I would say, try and bring both the fundamental and the technical aspects together when you're taking a trade. And the reason why they don't go along well is because fundamental people think that we are investing for the long term, right? So typically, a fundamental guy, when he's looking at his investment, he's thinking, I'm investing for 3 years, 5 years, 10 years, or maybe I'll never sell them. Like, for example, some people who've been investing in HDFC Asian Paints for the last 10 years, they don't intend to sell HDFC for another 10, 20 years, which is fine, right? And technical people, they think they have to make money on a daily basis. So they'll do intraday, they'll do FNO, they'll do short-term trades. At max, they will do swing trading, where they'll make up 10-15% returns in 10, 15, 20 days. Some people do a 1 month swing trade. Some people also do 3 months, 6 month swing trades, right? So that's the sort of investment tenure, and I think that is where the fundamental mismatch is, because somebody who's looking to build a long-term position, doesn't align with how technical people think, right? But if you can sort of, there's a very, if you can sort of use the technicals to time your entry in good companies and then time your exit, because exit is something where a lot of people fail, right? So exit is one aspect which is very less understood, because when to exit is almost like a conundrum that even the best of money managers have faced and continue to face, right? So I want to discuss a case study here which will sort of tell you where I'm coming from. So if you look at this stock called Weber Global, right? So I have given this example a lot of times to my clients as well, but on this forum, I want to bring this, and there are many such examples, right? So we're looking at a time frame, something like 23rd March 2020, and we are looking at the weekly chart. So just to give you some sense of charts,
if you haven't sort of tried looking at chart, this is something called as trading view. Here you can create a free account and start looking at charts. What you are seeing here is a weekly chart. So this is where you get to see this is a weekly chart. I can also change this into a daily chart. And then there are options to make it a 5-minute, 15-minute, 30-minute, 45-minute chart also, which basically means that so a lot of intraday people who are looking to do intraday trades, they would look at the 15-minute, 20-minute, 45-minute or max Monday chart. Long-term investors, on the contrary, would like to look at more long-term trends, and they would be more interested in the weekly or the monthly chart, right? So this is where it's not that, as for us as long-term investors, the weekly and the monthly makes more sense. And for somebody else, they would want to look at the 15-minute, 10-minute charts as well, right? So that's where the perspective changes depending upon what kind of an investor you are and how long is your investment horizon, right? Now, I just want to go back to the weekly chart, and so just to explain candles also, I mean, if you are aware, that's good, but typically this is like this single candle is a weekly candle. So over a 5-day working period, this candle is made. What it means is that sorry, can you guys please mute yourself? Everyone else who's not speaking, I think. Yeah, thank you. So this is a candle. What it means is that this is my starting point. So this is my starting point, the low. If it's a green candle, what it means is that the closing point is above the starting point. If it's a red candle, what it means is that it started up but closed below. So depending upon where it starts and where it closes, it gets that type of color. This wick is the maximum that was reached, and this wick shows the minimum that was reached for the week. This is for the week, right? So for example, in this case, this at the start of the week, it started at 597, and through the week, it came down as low as 594.75, but it closed at 700.15. But during the week, the highest reached was 707. So depending upon where it starts, where it closes, what is the highest and what is the lowest. These are the 4 points in this candle, right? And similarly for the red also, if the closing is above the starting, it is a green candle. If the closing is below the starting, it is a red candle. Now, there are all sorts of candles here. So for example, this candle that you see, it is the closing and the starting are almost the same. What it means is, so in the market, there are two forces. One is the bull force and the bear force. So the bull force is trying to pull the stock up, and the bear force is trying to pull the stock down. So whenever you see this kind of candle, it means that there are equal numbers of buyers and sellers, right? There's no one party that is dominating in this particular week. There are as many sellers and there are as many buyers, and hence it sort of closed at almost the same place where it started. But you do also see candles like for example, look at this candle here. What this candle shows is that it started here. So it started at 858, went all the way to 906, but then closed at 841, which means that it started high and the bulls started pushing the stock up. But after that, the bears dominated. So the people started selling. They might be doing profit booking, or they don't feel the stock is sort of undervalued. They started selling, and it closed all the way below the starting point at 841. Something like this is a very bearish candle. On the contrary, if it so look at this. I mean, here the colors don't matter. So
This is almost like a bearish candle itself, because again here this is closing at the lower sort of range of this line, which means to say that the bears are dominating. Here again the bears are dominating, you know. But then you have a lot of these candles where, for example, look at this candle here, and here the uh, the bullish people are sort of more dominating, because this has closed on the upper side of this candle, uh, right? So that is how you can sort of make sense of the, you know, the bull and the bear scenario, depending upon how these candles are. Now these candles on their own do not mean a lot, so you need to look at the trend, which is why you have a hammer trend and you have hanging man and shooting star and all these trends, right? In this session we are not going to look at trends. So just to give you my background, I'm an engineer with an MBA, and I worked 7 years in investment banking. So all my experience has been in fundamental investing only. At some point in my life, again, going by how the fundamental guys think and the technical guys think, nobody wants to do the other thing. Fundamentals don't want to do technical, technical don't want to do fundamental. And for a long while, I didn't want to touch technicals, but then after I looking at it, it started make sense to me. And so whatever technical that I have learned over the last 4 or 5 months is very practical technical. Like I have not gone through a course to understand कितने तरह के patterns होते हैं, क्या क्या नाम है हर pattern का. I don't know all that, and it's not of great use to me also as a fundamental guy who's looking at technicals from a long-term point of view. Right. So this session is purely for long-term investors and how they should look at charts. Right. Now, so having understood these charts, we are now looking at moving averages. So what you see here, these lines, these are called moving averages. There's a 20-day moving line. There's a 44-day. There's a 50-day moving line. And this is on a weekly basis. Similarly, on daily basis also, you will see different lines. Green is 20, blue is 44, orange is 50, black is red, right? And across different time frames, whether you're weekly, whether you're monthly, you will see these lines in every chart. And these lines have something to say in terms of the trend itself. So we'll look at the trends also. Right, just going back to how basically these two things can be combined, and then I want to talk about the technical. So we looked at candles, we're talking moving averages now. How to make these moving averages, you can check on YouTube. There are a lot of videos explaining how you can basically create these moving averages. These are called indicators. So for example, I am using this Ichimoku moving averages, which is basically 20, 50 and 200 day moving averages. And there's another one which is a 44-day moving average. So this blue one is 44-day moving average. I can choose to switch off or switch on, depending upon what I want to see. Right. So basically, looking at the Weber global example, and let me move to the weekly chart. As you can see here, in March 2020, we were something like 126 rupees per share. And from here to May 2021, March to May, almost over a year, the stock went all the way from 126 to something like 1038 rupees. That's where it sort of topped. And post that, the stock started correcting significantly and now came back to 300 rupees per share. So you see this journey from 120 rupees to 1000 rupees and then back to 300 rupees. Somebody who is a very long-term investor in Weber Global has made a 10x, and that 10x has come down to 3x, right? And that is what I'm talking about. That's the whole thesis of looking at technicals, because once you've made a 10x,
then you should be in a position to exit this stock or at least downsize your position, because you don't want to be part of this rally here, which is the second half all the way from 1,000 rupees to 300 rupees. And this tags along with the fundamentals also. So if you look at fundamentally, when we are looking at Webber Global, I'm just looking at the PE chart here. So this PE chart, went from March 2020, this was a PE of 12.8. This all the way went up to 63.3. That is the kind of PE expansion we have seen during this time, right? So, and after that, once the PE sort of tops, then you start to see mean reversion in valuation, which is the correction of the PE. And this is something which is inevitable because mean reversion is something that has to happen after the PE has sort of went into the overvalued zone. So this is almost like an overvalued zone. And after this, we saw significant PE correction. So if you have a fundamental view on the stock and you understand the valuation, then you can correlate this valuation increase with the increase in the stock price to take a call at this point of time that now the reversal will start, right? Now, one thing we don't know if the PE will max out at 60, 70, 80, we don't know that. But once it is, let's say, above 50, 60, we know that now it is getting into the overbought zone or the overvalued zone, right? From that point of time, you need to be very cautious of the reversal in trend. Now let me come to, how you could sort of write this journey. So let's say we were lucky, we were very lucky to find Webber Global at this point, at this price on 23rd March 2020, we bought the stock at 144 rupees per share. Now, how do we sort of stay the course, right? This is like following the trend, which I talk about here, right? Which is figuring out trends and staying within the trends. So if you look at this stock here, this is the 20-day moving average. And I'll go on a daily chart because that's where you see a lot of movement. But even in the daily chart, what you will try and see is that these bars, so to say, respect these lines. So, just to be more particular, for example, in this zone, all through this while, can you see that the price basically comes and touches the green line and then goes up, right? Every time it touches the green line, it keeps going up. And this is something called as staying the trend. So once a stock is an uptrend, and very clearly you can see this is the uptrend, this is the downtrend. So in an uptrend, the stock price keeps taking support at one of these lines. Now it could take support at the 20-day moving average 44.50, or there could be some people use 30-day moving average as well. I think every stock has its own support taking line. In this case, the 20-day moving average sort of fits perfectly. Every time it touches the green line, it goes up. And that's how you can stay the trend. So even if you are, let's say, at 269, you still don't think you should sell because the stock is continuing to stay the trend. It goes up and then comes down, takes support at the green line again, keeps going up, keeps going up. There again, at this price, at 430, you still don't think you should sell. Why? Because the stock is sort of continuing to stay the trend. It is continuing to support these lines, which is the green line and the orange and the blue line. Right? And until this point, you've not got a signal to sell, to be honest, right? Because you're staying the trend and the stock is sort of respecting the moving averages. And if you stay the course and you see that, even if it doesn't take support at the 20, it will take support at the 34. And all this while you have been invested. At no point did the chart give you the signal to exit the stock, right? And fundamentally, you can see that, you went from
a PE of 20 to almost a PE of 60 at this point of time, and you know that that stock is overvalued now. But then the chart has to give you that signal to exit, right? So where do we see the X signal to exit? Now, if you look at what happened here, the stock, it came down, the 20-day moving average came down 44, came down 50. So for the first time in almost a year, it broke all these three lines and came down. And something magical happens after that. It starts to take resistance at the lines where it was taking support, right? So these lines here in an uptrend, they were acting as a support, and now they are sort of acting as a resistance. So every time it touches these lines, it will start to go down, right? It came up and then took resistance and start going down. Took resistance, started going down. And this trend will continue all through the downfall, right? So, it will keep continuing. It will keep continuing. At some point, here it tried to break out of these three lines, but then again took resistance. Here again, it tried to break out, again took resistance at this line, which is the 200-day moving average. And it's been consolidating since. Like every time it goes and touches the 200-day moving average, it comes down, right? So very simple questions, first of all, that, how do you sort of make a 10x by looking at a chart, right? Which otherwise people think, technicals, you can only make like 10-15%. You can do a swing trade and, 10-15% आपका बन जाएगा. That's the sort of approach people have to looking at charts. But you look at the weekly and the monthly, and it will give you very clear indications that this is not your time to exit the stock. So you can actually do a 10x all the way from 130 to 1,000 rupees by just staying the course. And how do you know whether to stay the course? Because the stock will keep respecting these lines, which is the moving average. As simple as that. We are not looking at any candles. We are not looking at any patterns. There is no remembering of any of those bearish, bullish trends. Very simple. We are following the lines. The lines are 20-day, 50-day, 44-day moving averages. And the lower the line, the stronger the support. Right? So what are these moving averages actually? Moving averages, so 20-day moving average is last 20 days का जो price है उसका average. 44 is last 40 or 44 days का जो price है उसका average. Right? So that is how these lines are made. So which is why when something is an uptrend, the 20 ka line will be above the 44, 44 will be above 50, and 50 will be above 200. Right? That is when you know the stock is an uptrend. Because daily price changes are more volatile. So the green line will continue to go up at a faster slope versus 44 versus 50 versus 200. And after the reversal, the same thing is going to happen the other way around, right? The 20 will come down much quicker than the 40 and the 44, and the black is, yet to come down. It's on. So as simple as that, these moving averages very clearly tell you that this is the uptrend and this is the downtrend. And all you have to do is stay the course and know when the trend reversal has happened. So trend reversal, you will first get to know on the daily, then the weekly, and then the monthly. Like I told you, once this chart sort of breaks all the three lines and starts to take resistance, that is when you know that the bearish trend has started. And this is when you need to exit the stock. So you will not be able to exit at, let's just say, 1,000 rupees. At this price, if you're a fundamental guy, you will know that it is overpriced, but you still don't know if this is the exit price, because we don't know if the PE will go to 60, 70, 80. अभी 60 पे top out करके वहां से trend reverse करेगा कि 70 पे करेगा, हमें पता नहीं. And to be honest, nobody knows. Even when we are looking at technicals, will probably be our best time to exit is at a price of 841, क्योंकि उसने ट्रेंड चेंज किया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे जाना स्टार्ट किया. तो आपने मान लो 130 पे खरीदा, तो आप 1000 पे तो एग्जिट नहीं कर पाओगे, बट आप 840 के लेवल्स पे एग्जिट कर सकते हो. यू डोंट हैव टू
go through this pain of going all the way from 840 to 300 rupees, right? That pain you can avoid even in very good companies like Weber Global, right? And that's the whole thesis of looking at a chart as a long-term investor, right? Because otherwise, then you are just going up and down and it's not going anywhere. Unless you are in a blue chip stock like HDFC, Kotak, all of those. We'll discuss these stocks also. But essentially, that's the sort of thought process. Now I can, let's look at some more examples. We've been talking about Weber Global, but and I'll come to these patterns later. But let's just look at some of these some companies which made a lot of money during COVID. For example, let's look at Deepak Nitrite, and let's see if we can stay the course. If this thing that I discussed in Weber Global applies to other companies also, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ वो एक चार्ट में ही दिखा है बस. तो अगर मैं अभी वीकली में चाहूँ, क्योंकि वीकली पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड ज्यादा क्लियर दिखता है, तो आप देखोगे कि ये स्टॉक जो है बहुत अच्छे से अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, राइट? सो a journey that started almost at a price of 300 rupees, which is somewhere in this range, which is somewhere here. And I'll tell you how to find the reversal in trends, how to basically identify कि हाँ अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने लगा है. ये तो जो हमने बात की, ये हमने बात की कि how do we stay the course, how do we not exit early, 100% 200% बना के बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए और कब निकलना चाहिए, हम अभी वो डिस्कस कर रहे हैं. हम ट्रेंड रिवर्सल की बात इसके बाद करेंगे. बट यू सी ऑल द वे फ्रॉम हियर, विच इज 395 का शेयर, इनफैक्ट उससे थोड़ा पहले ही 316 से ये शेयर ट्रेंड में रहा है. सो एवरी टाइम इट टचेस द 20 वीक मूविंग एवरेज, बिकॉज वी आर ऑन द वीकली चार्ट, it takes support and keeps going up. There is no reason for me to sell this stock. यहाँ पे क्या हुआ? It came down, but then it took again support at the 44. So I am not worried as long as 44 या 50 पे जाके support लेता है, because these are more better support zones. But यहाँ पे क्या हुआ? What happened here is that the stock price came down 20, came down 44, came down 50, and then it started making these lines at the resistance. So अभी वो वहां टच किया और यहाँ से नीचे जाने लगा, है ना? So this is where I sort of make up my mind कि नहीं यार, now चलो, this is my time to exit. So basically 300 400 was my buying price, and 2300 or 2000 200, something like that, somewhere on this candle is when you should exit, right? And you've made a 7x on your investment in a time horizon of whatever, 2 साल में आपका, I think 2 साल भी नहीं, something like December 19 से May 22 तक, over a less than 3-year period, you've made a 7x on your investment by just staying the course. And what told you to stay the course? The charts told you. It basically told you that your stock is in the trend. अगर यहाँ पे थोड़ा consolidation भी आता है, so these periods of consolidation are bound to happen. It will come down, consolidate, touch this green line again, and then start to go up again. So अगर 10, 15, 20% का stock में correction आता भी है बीच में, so it's not something for us to sort of panic as long as it is staying the course. अभी आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो मैंने लाइन बनाई है, इस पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड दिस विल कीप कंटिन्यूइंग डाउन. अभी द स्टॉक इज क्लियरली इन अ डाउन ट्रेंड, because these lines, as you can see, are now sloping down. So my 20, 40, 50, all of these are now starting to go down. So you can see more correction in Deepak Nitrite. This stock is definitely not in an uptrend. So आपका ये जोन था सेल करने का. यहाँ पे आप नहीं कर पाते, बट यहाँ पे आप जरूर कर पाते. यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन आपको मिल रहा है
कि this is the time to exit the stock, right? So even as long-term investors who generally like Deepak Knight, right, you don't want to be a part of this journey. And even if you want to be a part of this journey, you would want to know कि हाँ मेरा अभी correction चल रहा है, let me not buy here. So let's say कि you're a 15-year-old investor in Deepak Knight, right, and you don't intend to sell even at this price. You want to keep this stock till you reach your retirement. It's fine, but at least you should know at what points you should incrementally load up this stock, right? So चाहे Weber Global या Deepak Knight, right, these are not the zones where you buy and average your price, right? This is not where you should be averaging, because you know that there's more pain coming. The stock is in a downtrend. It will keep going down. It will keep taking this line as resistance and keep going down. And you should probably look for a much better bottom where जहाँ पे कि consolidation होता है. अभी consolidation की बात करेंगे हम, but these are not the zones where you should buy. These are no touch zones. Even if you are not looking to sell, you shouldn't be buying here. चाहे वो 40, 40, 50, 60, whatever percent correction हो जाए, as long as it has not bottomed out and starting to reverse again, you should not be averaging your position. Yeah, sorry. Yeah, please go ahead, sir. Yeah. So here I had just one question. I mean, do we see this only basis DMA, or there is any other? I mean, basis the different charts of DMA, or do we have other perspectives also? How do we know? I mean, because this is as you rightly said in the early part of the session, knowing when to exit is the maximum challenging question. Yeah. So, see what happens. I have seen that, for example, I'll just take you to a stock that we are currently investment in. By the way, these are not buy sell calls. So take your own investment decision. But if you look at what has happened here, and I'm going to go to the daily chart. So for example, मेरे trading view पे ये चार मैं यूज करता हूँ. 20, 50, 200 तो रहते ही हैं. अभी मैंने रिसेंटली एक 44 भी ऐड किया है. एंड यू सी यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो स्टॉक है ये कभी कभी ग्रीन को सपोर्ट लेके चलता है, बट बीच में जैसे बीच में कोविड को लेकर एक स्केयर हुआ था चाइना में, तो ज़्यादा करेक्शन हो गया, बट उसने फिर 44 पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे उसने तीनों ही फिर ट्रेंड ब्रेक कर दी एंड अभी एक अलग ही जोन में जा रहा है. तो फॉर एग्जांपल ये जो जोन है ये आपको पता है कि आपका स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है. तो जो चीज़ आपके लिए एटलीस्ट 44, 50 जहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, अगर स्टॉक सपोर्ट में है तो आप बने रहिए. आई मीन यू डोंट हैव टू पैनिक एंड स्टार्ट सेलिंग कि नहीं यार मेरा तो 15% का करेक्शन हो गया. बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कोई चीज जो आपको डेली पे सपोर्ट नहीं लगती ना, वो कभी कभी वीकली पे सपोर्ट दिखती है. जैसे डेली पे आपके जो 20, 20, 44 और 50 आपको लग रहा है कि इसने तीनों ब्रेक कर दिए, तो मे भी मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए. बट अगर आप इसको फिर वीकली में जाके देखो तो वीकली में आपको अभी भी दिखेगा कि ये सपोर्ट ले रहा है ना. तो इफ यू वाइडन योर होराइजन, कि नहीं, आइडियली मैं कहूंगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको डेली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि डेली में फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं. कभी कभी वो 20, 50 वाले ट्रेंड्स ब्रेक भी हो जाते हैं. इसको आप और क्लियरली देखना चाहते हो तो और क्लियरली आप मंथली में देख सकते हो कि मंथली में ये जो है ये अपना जो ग्रीन लाइन है विच इज 20 मंथ मूविंग एवरेज, उस पर बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रहा है. इट इज नॉट ब्रेकिंग दिस. वीकली पे आई थिंक ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि एक तो ये ट्रेंड में भी दिख रहा है और दूसरा यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा है कि उसने 2 बार आया. यहाँ पे भी उसने ब्रेक करने की कोशिश की बट सपोर्ट लिया. यहाँ पे उसने थोड़ा सा नीचे गया बट क्लोजिंग उसकी ऊपर हुई. सो बेसिकली ये स्टॉक अभी भी ट्रेंड में है. आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट. बट डेली पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि डेली पे ऐसा लगेगा कि उसने ब्रेक कर दिया है. अभी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल I'll show you some. So look at the look at the longer time horizon. It will tell you a clear indication of the trend. Daily पे कभी कभी it confuses you because the volatility की वजह से या कोरोना या whatever news came या अदानी, for some reason daily will
confuse you, and which is why you should always look at weekly and monthly. So अगर आप देखो कि ये स्टॉक इतना करेक्ट तो हुआ, इट केम ऑल द वे फ्रॉम 1700 रुपीज टू 968 रुपीज, बट ये अभी भी अपने ग्रीन लाइन पे सपोर्ट ले रहा है. तो जब तक ये इसको नहीं ब्रेक करता ना, आई हैव नो रीजन टू पैनिक. मतलब मेरा स्टॉक 40% करेक्ट हो चुका है, but I am still not panicking because I know it is respecting these lines. Abhi, okay, let me show you something. I wanted to actually show this in the last, but now that this has come in the discussion, so let's look at the blue chip stocks and how they have sort of done over the last whatever 20, 25, 30 years of their listing. And I'm going to go to the monthly chart because we are looking at a very, very long trend here. So, so this is the stock all the way from 2000 till 2023, which is the present day. Now, this is like a beauty to me because मैंने जब इस चार्ट को देखा तो मुझे लगा अरे वाह, मतलब how simple it is to invest in a blue chip, right? So you look at आज तक on a monthly chart, HDFC Bank कभी डाउन ट्रेंड में गया ही नहीं है. It has been in the uptrend for the last whatever 30-40 years of its listing, and over the year it has always been in an uptrend. And if you ask me very simply, what should have been my buying points? So these are my buying points. Every time the stock touches the green line, which is the 20-month moving average, these are my buying points. यहाँ पे मैं खरीदूंगा, यहाँ पे खरीदूंगा, यहाँ पे खरीदूंगा. जब ये कोविड आया, कोविड आने के बाद भी उसने अपने 50-month मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया. तो जब मार्केट गिर रहा था तब लोग डर रहे थे कि अरे अभी खरीदना चाहिए क्या HDFC बैंक, कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा. And there were a class of people who were buying. यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो, both red and green, जिनको और अच्छे सपोर्ट लेवल पे स्टॉक खरीदने को मिला, वहां से फिर ये ऊपर गया. अभी बहुत रिसेंटली जब 1400 पे था स्टॉक्स, तो हमने अब काफी सारे अपने क्लाइंट्स को बोला कि देखो अभी ये मस्त अच्छे बाइंग जोन में है, बिकॉज ये टिपिकली अपने 20 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे आता नहीं है. बट अगर ये आया है तो दीज आर बाइंग पॉइंट्स फॉर यू. And उसके बाद very beautifully the stock went all the way from 1300, 1400 odd levels to now at 1658, right? So if you ask me कि HDFC में SIP करना चाहिए क्या, I'm not a guy, I'm not a fan of SIPs, but these are my points to buy, right? I mean, I would load up my HDFC from a 25-30 year perspective. These are my basically points to do my SIP, not the monthly SIPs that mutual funds do. But just open the chart, look at the monthly, and it will tell you that these are your points to load the stock. And this is not just HDFC, right? I can show you every other blue chip stock which behaves like this. So we are at Kotak Mahindra Bank, and Kotak Mahindra Bank, as you can see, again is taking support at the 20-month moving average very beautifully. You know your buying points. No genius required to tell you कि अच्छा अभी स्टॉक को एवरेज करना चाहिए. यहाँ पे अगर ये 20 ब्रेक करके नीचे आता है तो इवन बेटर. लाइक दिस इज नॉट अ टाइम टू गेट पैनिक कि अरे नहीं अभी मैं बेच के निकलता हूँ, कोटक के दिन बदल रहे हैं. पिछले 25-30 साल से नहीं बदले और आगे भी नहीं बदलेंगे, आई कैन टेल यू दैट. एंड इसका आप जितना नीचे के सपोर्ट पे खरीदोगे आपके लिए उतना अच्छा है. यहाँ पे खरीदने को मिलता है और भी बढ़िया, यहाँ पे खरीदने को मिलता है और भी बढ़िया. बट अगर आप 20 मंथ पे खरीदते हो, एनीवेज आई मीन इट्स स्टिल अ गुड बाइंग प्राइस. यहाँ पे नीचे आता है आप और खरीदो. सो दिस इज हाउ यू लुक एट दीज मूविंग एवरेजेस टू से कि एंड टू बी ऑनेस्ट पिछले 25-30 साल में मंथली चार्ट पे कभी आज तक कोटक ने सेल का सिग्नल दिया ही नहीं है. मतलब नेवर एवर इट हैज टोल्ड यू कि हाँ नाउ इज द टाइम टू एग्जिट द स्टॉक, राइट? एंड द सेम थिंग आई कैन शो यू फॉर एशियन पेंट्स, HUL, मतलब कोई भी उठा लो, कोई भी उठा लो. ये देखो ये एशियन पेंट्स है, अभी यहाँ पे है मेरे आज की बात करते हैं तो 20 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे है. सो इज इट अ गुड टाइम टू बाय? आई थिंक इट इज. आई थिंक दीज आर वेरी गुड टाइम्स टू बाय एशियन पेंट्स. कल को जब दिन अच्छे आएंगे ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाएगा, राइट? बिकॉज यहाँ से आप देखो ये जो जंप है 1725 से ऑल द वे टू 3353,
अब ये जंप छोटा मोटा जंप नहीं है, एशियन पेंट्स के लिए बहुत बड़ा जंप है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ व्हाट 3 अगस्त से लेकर 1 दिसंबर 2021 के बीच में आपने स्टॉक ऑलमोस्ट 60-70 रिटर्न बनाया है एशियन पेंट जैसी कंपनी में, जहाँ पे टिपिकली लोग बोलते हैं कि 10-15% से ज़्यादा बनाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक में उतना पैसा बनता नहीं है। बट अगर आप अच्छे पॉइंट पे बाई करो और अच्छे पॉइंट पे सेल करो, तो you can, and even if you don't want to sell, at least know when to average. Like, just don't keep doing your monthly mutual fund SIPs, because you are buying at these prices also. If you look at the chart, it will tell you कि why are you buying at these prices. I mean, there are better points to buy a stock like Asian Paints, right? But then होता क्या है उस टाइम पे, जनरल पैनिक, नहीं एशियन पेंट्स के दिन बदल रहे हैं, उसका पी बहुत ज्यादा है, उसका ये है, उसका वो है, एंड देन यू आर मिसगाइडेड बाय द मार्केट। अल्टीमेटली फिर जब ऊपर चला जाता है तो फिर लोग बोलते रहते हैं नहीं यार ये तो एशियन पेंट्स है, ब्लू चिप स्टॉक है, आपने कैसे छोड़ दिया इसको, यहाँ पे खरीदने का मौका छोड़ दिया। मैं इसको ना थोड़ा आपको टेक फंडामेंटली बताता हूँ कि ये कैसे फिट बैठता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे HDFC बैंक मंथली चार्ट पे जब यहाँ पे था ना, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 अक्टूबर 2022, 1419 के प्राइस पे। अब हम चलते हैं फंडामेंटल साइड, और मैं यहाँ पे आपको प्राइस टू बुक रेशियो का चार्ट खोलूंगा पिछले 10 साल का। अभी आप देखो, इसका जो एवरेज है मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू 4.4 है, ठीक है। सी, मैं कोई बहुत मैं यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए कोई बहुत फंडामेंटल टेक्निकल ऐसा बहुत, दिस इज लाइक कॉमन सेंस। स्टॉक ओवर ए 10 ईयर पीरियड अब से सबसे चीपेस्ट जोन में है। मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू 3 पे ये पिछले 10 साल में बस एक बार आया है, और वो भी कोविड का टाइम था। कोविड के बाद वो वापस से प्राइस टू बुक वैल्यू 3 पे आया। आज भी वो 3.7 पे ही ट्रेड कर रहा है, इसका एवरेज 4.4 है। इसका मतलब HDFC हिस्टोरिकली अपने 10 साल में सबसे चीप जोन में है। सो फंडामेंटली मुझे आई नो कि HDFC इज ट्रेडिंग relatively cheaper over its 10-year history. And then technically, what is the stock telling me? Technically, it is telling me that it is trading below the 20-month moving average. So why am I not going to buy the stock? Right? These are very clear indications. So, for me personally, the way I look at a trade is जब मेरा fundamentally plus technically एकदम अच्छे बैठता है ना, both of them align together beautifully, and the thesis is such, then I have no reason not to buy that stock. As a portfolio manager, I buy, and I make sure that all my clients are also buying, right? And that trade comes with a lot of conviction. So if you tell me फिर मैं 10-15-20 हजार का SIP नहीं करूंगा इस स्टॉक में, फिर मैं 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया डालूंगा, वो भी एक स्टॉक में डालूंगा, because that is the kind of conviction I have built in that stock, है ना। those are my really good loading points, because those come, वो हर दिन मौका नहीं मिलता है, वो ऐसे 3 साल 5 साल पे एक बार आपको ऐसा मौका मिलेगा कि फंडामेंटली टेक्निकली, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 10 साल में वो कंफर्ट आ रहा है कि हाँ यार पिछले 10 साल में अभी सबसे सस्ता है ये स्टॉक। तो मैं यहाँ पे 50,000 का SIP नहीं करूंगा ना फिर। इफ आई एम रियली लुकिंग एट HDFC फ्रॉम अ 10-15 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर माई रियल हार्ड लोडिंग पॉइंट्स, कि 5 लाख 10 लाख रुपए है तो लगा दो आज HDFC बैंक, राइट। सो दैट इज हाउ fundamentally plus technically you sort of just increase your chances of making money, which is why I'm calling it a superpower. यहाँ से आप, you can't fail. The chances of your failure here, because आपने अपना downside एकदम से minimize कर लिया है, fundamentally भी minimize कर लिया है, technically भी minimize कर लिया है। यहाँ से आप बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। अगर आप long term investor हो तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है स्टॉक को लोड करने का। Anyways, so that is from a 15-20 year horizon, but what I was discussing was somebody who wants to sort of make a 4x 5x and then also know when to exit, right? So we looked at these trends. Now abhi for example, let me talk about let me show you a situation जहाँ पे कि कुछ नहीं हो रहा। So हमने uptrend देख लिया। uptrend कब होता है? जब वो sort of अपना जो मूविंग एवरेज है उसको रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है। अभी ऐसा भी टाइम आता है जब स्टॉक कहीं नहीं जाता, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कुछ नहीं हो रहा, स्टॉक में बस कंसोलिडेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे
अभी आप देखो कोवे मेडिकल एक यू नो माइक्रो तो नहीं बट मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप हॉस्पिटल स्टॉक है। एंड इसमें पिछले बहुत टाइम से, जैसे कि 21 अगस्त 2021 से अभी तक कोई मूवमेंट नहीं आया, ना अपवर्ड आया ना डाउन ट्रेंड आया, ये बस साइडवेज शिफ्ट कर रहा है। तो इन केसेस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये बताना कि अभी स्टॉक को उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टिल नॉट टेक्निकली आई विल नॉट टच दिस स्टॉक राइट नाउ, क्योंकि आई डोंट नो इफ द अप ट्रेंड हैज स्टार्टेड, राइट। I will, the way I would time my entry is in a fundamentally good stock that is about to go into an uptrend. जैसे अगर यहाँ पे कहीं पे अगर मैं पता होता कि मुझे कोई मेडिकल बहुत अच्छी कंपनी है और अब वो अप ट्रेंड में जाने वाली है, तो मैं यहाँ पे उसको लोड करता, फिर यहाँ पे मैं निकल जाता, फिर ये पूरा साइडवेज में अवॉइड करता, डाउन साइड में अवॉइड करता। सो ऑल्दो आई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके जो मूविंग एवरेजेस है ना, वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। यहाँ पे मूविंग साइडवेज में मूविंग एवरेजेस कभी क्लियर नहीं होते, क्योंकि वो लाइन ऊपर नीचे, कभी ग्रीन वाली लाइन नीचे होगी, कभी ग्रीन वाली लाइन ऊपर होगी। अल्टीमेटली द स्टॉक इज गोइंग नोवेयर, इट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, एंड देन 2-3 साल के कंसोलिडेशन के बाद कभी तो स्टॉक आपको एक अप ट्रेंड देना स्टार्ट करेगा, एंड वी विल डिस्कस दैट। बट वो अप ट्रेंड जो एक बार आपको पता चल गया, सो दैट इज योर एंट्री पॉइंट। एंड देन एज लॉन्ग एज दैट अप ट्रेंड लास्ट, वो रिवर्सल नहीं आता है, रिवर्सल आने लगता है तो फिर वो आपका एग्जिट पॉइंट है। नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई दीज अप ट्रेंड्स, है ना। सो हाउ टू से कि ठीक है अभी मेरा डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अभी मेरा अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, सो लेट मी नाउ स्टार्ट टू इन्वेस्ट। सो आई गिव यू एन एग्जांपल एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये अप ट्रेंड अभी चालू हो गया है। So I'm looking at this company called Indian Terrain Fashion. We've made money here. We are still invested. This is not a recommendation. So the stock came all the way from 243 rupees to 2122 rupees. Matlab, that is the sort of correction that people have seen. This is a micro cap stock, of course, very risky. If you don't understand the business fundamentally, never take positions in these stocks, even if it is giving you a technical signal. Right? That is the way how I look at it. But if you look at what has happened over the last 1 year, is that the stock is making higher highs and higher lows. Why? Because I have drawn two lines. So beyond these, moving averages, I also use these lines to indicate कि भाई मेरा टॉप कहाँ पे हो रहा है, बॉटम सपोर्ट क्या है। ये आपने काफी लोगों को देखा होगा इस तरह से यूज करते हुए। मैंने भी थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू किया है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट हियर, but it is very simple. What you need to do is join a line touching three bottom points. तो जहाँ भी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स टच कर रहे हैं आपके, उनको आप ज्वाइन कर दो। जैसे जैसे यहाँ पे टच कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये एक तरह से आपका रेजिस्टेंस का लाइन बन गया ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ ऐसी 1 2 3 4 5, जितने आप ज्वाइन कर पाओ उतना अच्छा है। तो ये आपका नीचे का रेजिस्टेंस बन गया। मतलब स्टॉक जब भी यहाँ पे आए तो इट्स अ गुड बाइंग पॉइंट। स्टॉक जब यहाँ पे जाए तो इट इज अ गुड सेलिंग पॉइंट। नाउ आई एम गोना, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं इसके वीकली पे जाता हूँ। अभी मैंने आपको बताया रिवर्सल बोथ नीचे से और ऊपर से। नीचे का रिवर्सल क्लियर कब होता है? जब आपका जो ग्रीन लाइन है विच इज द फास्टर मूविंग एवरेज, वो आपके 44 या 50 के ऊपर जाने लगता है। मतलब जैसे आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका ग्रीन नीचे से आया एंड यहाँ से इसने ब्रेक करके इट इज नाउ सॉर्ट ऑफ क्रॉसिंग द 44 and the 50. So once it starts to do that, and not just that, but the stock should also start taking support here. So stock जो है ना सपोर्ट भी लेने लगेगा। यहाँ पे जैसे ग्रीन हैज क्रॉस्ड येलो एंड ऑरेंज, एंड उसका स्लोप इज नाउ मच बेटर देन इसका स्लोप, एंड एवरी टाइम द स्टॉक कम्स इट इज नाउ टेकिंग सपोर्ट एट दिस लाइन। फिर क्या हुआ? फिर एक करेक्शन हुआ और उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया।
50 पे, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे करेक्शन हुआ, उसने इस पे सपोर्ट लिया। अभी आप देखो मेरा लास्ट लाइन ऑफ रिसोर्ट इज दिस लाइन, आई मीन माई ब्लू लाइन, दिस बॉटम ब्लू लाइन इज माई लास्ट रिसोर्ट। मतलब अगर ये लाइन मेरा ब्रेक कर जाता है, देन आई नो फॉर श्योर कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, या एटलीस्ट अप ट्रेंड में तो नहीं है ना। अगर अप ट्रेंड में नहीं है, देन मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू invest. This may also seem like momentum investing, where fundamentally good companies, we are trying to sort of invest only when there is momentum and sort of stay away when there is not much momentum, right? Or we are trying to find our averaging points, especially when we know कि हाँ अभी अपने lower level पे आ गए, मुझे higher level पे average नहीं करना, but lower level पे average, depending upon your perspective. Are you here to make money from a 1 to 2 year perspective, or a 5 year to 10 year perspective, or just to keep this holding till your retirement, okay? Depending upon what is your perspective. So if my perspective is to just make money over a 5-6 month period, then I will buy at this price and stay the course, because I know कि ये almost bottom हो चुका है और यहाँ पे support लेके ऊपर जाने भी लगा है, right? तो अभी I will point one more important thing now, जो कि अभी तक मैंने sort of discuss नहीं किया था, और मैं ना उसको monthly पे जाके दिखाता हूँ आपको. So you should start to notice this volume here, yeah, and compare it with whatever the volume was before. So आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, एटलीस्ट इसके कंपैरिजन में तो नहीं है. इवन व्हेन दिस बुल रन वाज कमिंग, दिस वॉल्यूम वाज वेरी स्मॉल, कोई वॉल्यूम ही नहीं था इसके कंपैरिजन. So this is me coming to another important fact कि a very good bull run is always supported by volumes. So जब भी stock uptrend में रहेगा, you will see that consistently the volumes in that stock are very good. In fact, we can go back to all the stocks that we've discussed and check कि वहाँ पे क्या क्या volume था. But यहाँ पे the difference is very stock. So I thought I'll choose this as an example. So as you can see, these buying volumes have come in after the stock sort of bottomed out. So if you ask कि how do we judge कि यहाँ पे bottom out हुआ कि नहीं? So on a monthly basis, if you see, my 20-month moving average is starting to go up my 44 and 50, right? So that is something which I'm clearly seeing. Ki, my green line is starting to go up above my 44 and 50. And so the stock is starting to change its trend. The second thing is it is supported by very high volumes. So when these two things come together, obviously this is backed by fundamentals ki haan, Indian Terrain as a business is doing a turnaround. So I have done the maths, I've studied the business. I think fundamentally it's doing a turnaround. We will not discuss fundamentals here, but basically, just to give you an example कि क्या चल रहा है मोटा मोटा ऊपर से. तो इंडियन टेरेन फैशंस में अभी आप जाओगे तो आप देखोगे कि सितंबर क्वार्टर में they gave the almost highest quarterly revenue. They were doing almost like 100 crores and then September में they did 150. And it came at a, so अगर आप पैट भी देखो तो पैट भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में रह रहा है, जो कि पहले काफी टाइम तक लॉस में था. So very clearly, fundamentally also the stock is giving a turnaround, and I can talk about valuation in a lot more depth, but not digressing from the technical issues here. Basically, the moving averages are starting to turn, and this is supported by very strong volume. So I know for a fact कि fundamentally business में कुछ change हो रहा है, and hence, very high likely of me making money in the stock over the next 2-3 years. Very high likely. And so this is what I want to talk about. मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा turnaround दिखाता हूँ जहाँ पे कि how do we pick a turnaround? So RBL Bank again. RBL Bank is one stock जहाँ पे बहुत correction हुआ है, everybody knows. अब मैं यहाँ पे weekly पे जाता हूँ और आप देखो ये stock में क्या हो रहा है. सॉरी, डेली पे ज़्यादा अच्छा पता चलेगा. तो आपको जितना अर्ली आइडेंटिफाई करना है ना, आपको उतना मतलब वही ट्रेंड वीक डेली में पहले दिखेगा, फिर वीकली में दिखेगा, फिर मंथली में दिखेगा.
उसमें ज्यादा टाइम लगता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, बट वो उतना शॉर्ट भी होता है। सो जितना आप लॉन्गर होराइजन में देखोगे उतना क्लैरिटी मिलेगा, कंफ्यूजन कम रहेगा, बट थोड़ा उसको टाइम भी लगता है उस ट्रेंड को समझ में आने में। अभी मैं द वे आई वुड थिंक अबाउट द टर्न अराउंड हियर is that look at how this stock, the moving average shifted. So यहाँ पे on a daily chart, the moving average, which is the 20, started going above the 44 and the 50. And then it starts to take support on that line. So यहाँ पे support ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है, इधर support ले रहा है, इधर support ले रहा है, इधर थोड़ा support break किया है, but then I know for a fact कि weekly पे support ले रहा है, तो I'm still not worried. Weekly पे यहाँ support ले रहा है, so I still know. अगर आप देखोगे वीकली पे भी उसने टर्न अराउंड दिया है, सो ग्रीन is starting to go above the yellow and the green, and so this is a very clear sign of a turnaround कि now इस कंपनी के एटलीस्ट टेक्निकली दिन बदल रहे हैं, एंड समवेयर ये फंडामेंटली भी दिखेगा। एक फंडामेंटल इन्वेस्टर को जो केवल फंडामेंटल ट्रैक करता है उसको दिखेगा कि आरबीएल बैंक पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली 200 करोड़ का पैट जनरेट कर रहा है। इसके जो मार्जिन है उनमें इंप्रूवमेंट आई है। जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो एक टाइम पे 500-600 करोड़ का लॉस देता था, आज 300 करोड़ का लॉस देता है। ओवरऑल कंपनी 200 करोड़ का पैट डिलीवर कर रही है ओवर द लास्ट 3 क्वार्टर्स, जो कि पहले 60, 115, कभी कभी तो लॉस में भी रहा है। इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे राइट ऑफ किया है अपना जून में। तो उसके बाद से बुक क्लीन है। अगर आप जीएनपीए, एनपीए ये सब ट्रैक करोगे आपको दिखेगा बहुत क्लियरली कि स्टॉक का फंडामेंटली क्वार्टर रिजल्ट इंप्रूव कर रहा है, और यही चीज आपको टेक्निकली भी दिख रही है। ये टेक्निकली मेरे मूविंग एवरेजेस रिवर्स कर रहे हैं। अभी अगर आप आरबीएल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, so these are your points to buy. This is my opinion, by the way, not a recommendation. So these are your points to buy because as long as it keep respecting these lines, you should stay invested. And all this while, मान लो you are a very, I'm just saying, giving an example कि नहीं, you think कि RBL is a very good bank. Maybe you are an employer RBL and you think it's a very good bank. But these are your points to avoid because the stock is in a very clear downtrend. Even if it has fallen from example, let's just say कि 650 से नीचे गिर के आ गया 200-250 रुपए, अभी आपको लग रहा है यार ये तो बहुत करेक्ट हो गया, शुड आई एवरेज, मतलब इस प्राइस पे तो एवरेज करना चाहिए, बट नहीं, उस प्राइस पे एवरेज नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है। अभी भी स्टॉक ने क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया है रिवर्सल का। सो ये और गिरेगा, अभी यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा, अपने 20 पे रेजिस्ट करेगा और गिरेगा, ऊपर जाएगा, रेजिस्ट करेगा और गिरेगा, यहाँ पे फिर से रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे उसने बहुत क्लियरली उसको ब्रेक करके ऊपर गया है, राइट? सो आई विल रिमूव दीज लाइंस जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, बट एज यू कैन सी it has starting to now reverse convincingly. And if I look at daily, ये और अच्छे से दिखता है। I'll tell you how. क्योंकि डेली पे इसने 44 और 50 तो ब्रेक किया ही है, अपना जो 200 डे था उसको भी ब्रेक किया है ना? And it is now sort of continuing to follow the trend, right? So this is how we figure out कि हाँ अभी डाउनफॉल खत्म हो गया, अब मेरा अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, एंड हेंस दीज आर माय गुड पॉइंट्स टू लोड। ठीक है, now I'll talk about another company. So this is about staying that trend. ठीक है, अभी we can take more examples, but I think I'm already sort of crossing my time here. I want to cover 2-3 things which are basically patterns, right? And these are called breakout patterns, and I think breakout patterns along with fundamental are really amazing. I mean, if you can, so for example, long term investors को बोला जाता है कि आपको आपके पूरे साल में 10 से 15 दिन ही होंगे जब आप पैसे बनाओगे। इसके बियॉन्ड स्टॉक या तो करेक्ट हो रहा होगा या तो कंसोलिडेट कर रहा होगा, तो आपको वो 10 से 15 दिन बने रहने के लिए पूरे साल इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो 10 से 15 दिन कौन आने वाले हैं, कब आने वाले हैं। दैट इज देयर लॉजिक ऑफ सेइंग कि आप इन्वेस्टेड रहो, एंड आई एग्री विद दैट, राइट? आई एम नॉट to begin with, I'm a fundamental investor, and then
I look at technical. So I agree with that concept. But if you look at some of these charts and breakouts in a slightly more detail, you will see that there is much higher potential of making higher returns over a very short period of time. Now, I will show you a trade which I've taken personally, and it worked out exactly जैसा मैंने सोचा था. और मैं आपको वो ट्रेड बताता हूँ और वो कैसे लिया था वो भी बताता हूँ. So उसके पहले there are only two patterns that I follow, and I follow the triangle pattern much more than I follow the other one. This other one is called cup and handle. Sorry, what are your top fundamentals? I will come to the fundamentals, in a while. Maybe we can have another session on that. And you can also call me one-on-one. But I want to talk about this pattern and the triangle pattern, which I think a lot of you who do technicals would know कि हाँ भाई triangle pattern होता है, breakout होता है कुछ तो, and वहां से फिर stock भागता है ना. So अगर आप क्लियरली देखो तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है. और ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे मैंने पर्सनल ट्रेड एग्जीक्यूट किया था. तो ये ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, ऊपर का जो लाइन होता है वो रेजिस्टेंस होता है, नीचे का जो लाइन होता है वो सपोर्ट होता है, और ये लाइन जो है एटलीस्ट 3 पॉइंट्स टच करना चाहिए. सो 1, 2 और 3. नीचे ऑल्सो इट्स द सेम थिंग, 1, 2 एंड देन 3, राइट. तो और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे ना तो यहाँ पे भी वही चीज हुई है. और जब वो पैटर्न ब्रेक करता है तो वहां से स्टॉक में एक तेजी आती है, एंड ये तेजी जो है इट इज बैक्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ऑल्सो. So what we are discussing here is now how to identify those patterns and how to identify a breakout. Because what happens in a breakout is very, very interesting, and it's very, if you think about it, it's a very good way of making money. But a lot of these things have to come in place. For example, your fundamental has to come in place, your technical has to come in place, and then the trading pattern has to come in place. तो जब ये तीन चीजें एक साथ होती हैं तो आपका जो कन्विक्शन आता है उस ट्रेड में वो बहुत ही जबरदस्त होता है. Which is where, I don't know if you've heard some people talking about having only 2 stocks in their portfolio, 3 stocks in their portfolio at some point of time. For example, वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो में 6-7 स्टॉक से ज्यादा स्टॉक्स नहीं होते, राइट. एंड इसका एकदम उल्टा है म्यूचुअल फंड, क्योंकि वहां पे 70-80 स्टॉक्स होते हैं. But anyways, I'm not getting into mutual funds. What I'm only saying is, when you have that sort of conviction in that trade, you can go ahead and put 4 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs in a single trade, क्योंकि वो फंडामेंटली टेक्निकली एकदम बैठ रहा है. एंड उस ट्रेड को भी लेने का एक प्रोसेस है. सो आई गेट टू दैट प्रोसेस. बट बेसिकली ये जैसे एक ट्रायंगल पैटर्न बना है. अब मुझे पता है कि टाइगर लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छी कंपनी है और इसमें काफी ग्रोथ है, इसके मार्जिन बहुत अच्छे हैं, इसका पैट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, और ये 10 के पीई पे ट्रेड करता है. सो आई शो यू. टाइगर लॉजिस्टिक्स आज भी 13-14 के पीई पे ट्रेड करता है. पिछले 5 साल का इसका आरओसी देखोगे तो 14-15% है, एंड लास्ट ईयर इटसेल्फ 60% का आरओसी रहा है. वेरी गुड बिजनेस. इट्स अ माइक्रो कैप, अगेन risky thing to do, but if you can build conviction, then क्या problem. But it's I always look at valuation that way. For me, valuation, after the quality of the company, valuation is the single most important thing for me to take any trade, because I'm not interested in buying stocks that are at 25, 30, 40, 50 ka PE, unless they are like blue chip. Blue chip, I've told you when to average. But if you are looking at small mid, then I'm the kind of guy who will like to buy stocks at 9-10 का पी, मैक्स 15 का पी. 20 के ऊपर तो मैं कभी नहीं जाता. तो जब हमने स्टॉक को ट्रैक किया था, ये 9-10 के पी पे ट्रेड करता था यहाँ पे, ठीक है. तो फंडामेंटली और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से वी वर वेरी कन्विंस्ड कि कंपनी सस्ती है. दूसरा, वो एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था, तो ये ट्रायंगल पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया. अब तीसरी एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विच अगर आपके ट्रायंगल पैटर्न के साथ आती है तो और भी बहुत
सॉर्ट ऑफ पावरफुल हो जाता है, और वो है एक लॉन्ग टर्म टारगेट को ब्रेक करना, जिसको कि ऑल टाइम हाई कहते हैं। सो अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे कि आप 5 साल 6 साल 10 साल पुराना कोई ऑल टाइम हाई है उसको टेस्ट कर रहे हो और उसको ब्रेक कर रहे हो, तो ये जो कंसोलिडेशन है ना, क्योंकि देखो बिजनेस 2016 से लेकर 2022 तक तो ग्रो किया ही है, उसका रेवेन्यू बढ़ा है, उसका पैट बढ़ा है, उसके मार्जिन्स बढ़े हैं, और अगर नहीं बढ़े हैं तो आप फंडामेंटली टेक योर कॉल, बट इस केस में बढ़े थे। तो तो जब आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है प्लस इट इज कपल्ड विद ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, देन दैट इज अ वेरी गुड ट्रेड टू टेक। मतलब पर्सनली दीज ट्रेड्स वर्क वंडर्स फॉर मी, आई कैन टेल यू। तो यहाँ पे ये यूनिक सिचुएशन बन रही थी कि फंडामेंटली मुझे कंपनी बहुत पसंद थी, दूसरा उसका वैल्यूएशन बहुत सस्ता था, तीसरा वो एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दे रहा था, चौथा वो साइमल्टेनियसली एक ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहा था, और पांचवी बात कि इसमें अमेजिंग वॉल्यूम थी। सो अगर आप इसका मंथली पे देखोगे तो यू शुड स्टार्ट टू लुक एट द वॉल्यूम्स हियर, a very good volumes in a company like this. Look at the volumes here, right? So ये 5-6 चीजें, this 5-6 things, when these come together, that is how you get the conviction to put 5 lakhs in a single trade. Otherwise you will keep diversifying और आपके 10-15% सालाना बनते रहेंगे, which is not at all a problem. I am completely in for it, but this session is not for mutual fund investing, and this session is not to sort of make 10-12% in a year. The idea of doing this session is to identify these breakouts after you have taken a very fundamental call on that company. I love the company, I love the valuation at which this company is, and I love where it is right now in terms of the fact कि वो एक पैटर्न बना रहा है जहां से अगर वो ब्रेकआउट होता है, so it can give me like 50-60% returns in a matter of 2 months, and that is what happened here. So after the stock gave a breakout, इसमें एक जो अच्छी चीज है मैं आपको बताता हूँ, and these are signs that you need to look for in a proper breakout, क्योंकि ब्रेकआउट कभी कभी फिजल हो जाता है, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता। तो इसमें मैं चलता हूँ डेली पे, आपको थोड़ा ब्रेकआउट का ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग इफ यू वांट टू। सो इफ यू सी, ये जो ब्रेकआउट आया था which is triangle breakout, it is came with a very good volume, right? So so how would, for example, if I have 5 lakhs to invest in this company, मेरे को पता है कि all of these 6 things are going well for me and I need to take a 5 lakh trade in this company, how will I invest in this company, right? So first, when I'm tracking this company, let's say मैंने 10,000 डाल दी, 10,000 से मैं ज्यादा डालूंगा नहीं इस पूरे फेज में, मैं बस वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग ऑल दिस वाइल। मतलब इन्वेस्ट करके वेट नहीं कर रहा हूँ, कैश लेके वेट कर रहा हूँ, दैट इज द डिफरेंस, राइट? कि मेरे पास कैश पड़ा है और मैं वेट कर रहा हूँ उसके ब्रेकआउट का। तो अभी जैसी, क्योंकि मुझे पता है मेरा पैसा तो ये 15-20-25-30 या 2 महीने में ही बनना है, बाकी तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक कंसोलिडेट ही करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट आना था, तो जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, तो लेट्स से कि मैंने इस प्राइस पे 1 लाख रुपए डाल दिए स्टॉक में। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रायंगल ब्रेकआउट क्लियर है, ठीक है। इसके बाद ये अभी जाके मुझे पता है कि ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा। कोई भी स्टॉक कभी भी किसी लिमिट को ब्रेक करता है या किसी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, तो वो टेस्ट करता है। टेस्ट करने का मतलब एक बार वो ब्रेक करेगा, फिर वो रिविजिट करेगा उस लेवल को, और वहां से फिर वो वापस से जाएगा ऊपर। तो 1 लाख रुपए आपने यहाँ पे डाल दिया ट्रायंगल ब्रेकआउट के बाद, फिर आप इसको ऊपर जाने दो। जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आप और 1 लाख रुपए डाल सकते हो। तो लेट्स से अभी हमने 2 लाख डाल दी, 1 लाख हमने डाला 255 के प्राइस पे, फिर 1 लाख डाला हमने समवेयर लाइक 314-315, ठीक है। उसके बाद जब ये करेक्ट होगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, तो दिस इज वेयर आई विल पुट माई अनदर 3 lakhs। बेसिकली हमारा आइडिया रहता है कि मेजॉरिटी जब जब ब्रेकआउट एकदम कंप्लीटली क्लियर है और कोई लेवल नहीं है ब्रेक करने के लिए, सारे लेवल्स हमने ब्रेक कर दिए, हमने ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक कर दिया, हमने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, उसके बाद सपोर्ट लेकर वहां से ऊपर जाने लगा, दैट इज वेयर आई लोड माई स्टॉक।
फिर मैं वहाँ 4 लाख 5 लाख 6 लाख भी डाल सकता हूँ, बिकॉज आई एम नाउ वेरी वेरी क्लियर ऑफ द ट्रेंड। इसीलिए कभी कभी अच्छे इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि हम स्टॉक को ऊपर की तरफ एवरेज करते हैं, ना कि नीचे की तरफ, राइट? क्योंकि वहां आपको पता होता है कि स्टॉक आपको पैसा बना के देने वाला है, श्योरिटी होती है, ट्रेंड होता है। एंड फिर ऑल द वाइल यू कैन राइड, सो यू नो, फ्रॉम हियर टिल ऑल द वाइल टिल 460 470 तक ये स्टॉक गया था। from where so you started buying at 255 and the stock went all the way up till 470 480, and all of this happened within a period of 2 months, right? So ये जो ब्रेकआउट आया, ये आया सॉरी ये जो ब्रेकआउट आया, ये जो आया, ये आया नवंबर में, और हमारा मैक्स आउट हुआ समथिंग लाइक end of December, right? End of last week of December is when we sold this stock, right? So that is how you make like 50-60% returns in 2 months. And when you are sort of in that position, then you don't put 40,000 50,000. You try and take a higher position, you try and invest more, because obviously your risk versus return is much higher, much higher during this 2 month time, you know. Now, I want to take few more examples. So let's look at a company called Mahindra CI, where exactly the same thing has happened. So if you look at, just a moment. मैं इसका ना वीकली चार्ट खोलता हूँ, और I'll put a what do you call long term horizon. So I'm making some lines here. तो ये जो मेरा लेवल था, ये मेरा ऑल टाइम हाई लेवल था, और ये मेरा लेवल है 2015 से। 2015 के बाद कभी स्टॉक ने ये ऑल टाइम हाई क्रॉस ही नहीं किया। एक बार यहाँ पे कोशिश की, वो नीचे चला गया, एक बार यहाँ पे कोशिश की, ठीक है, नीचे चला गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये एक, मुझे दिख रहा है क्लियरली, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, राइट? सो इफ यू लुक एट, दिस इज अ ट्रायंगल पैटर्न, एंड यही ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे भी बना था, एंड यही ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे भी बना था। बनते रहता है, इफ यू कैन फाइंड दीज पैटर्न्स, यहाँ पे आप लोड करो, यू कैन एंजॉय। सी, अगर आप स्टॉक को यहाँ पे लोड करते, ये जो पैटर्न आया, यहाँ जो ब्रेक किया, और इसके बाद इफ यू हैड स्टेड द कोर्स, देन यू वुड हैव गॉन समवेयर लाइक 180 से लेकर यू वुड हैव गॉन टू 293, ठीक है? फिर सो बेसिकली आते रहते हैं, बट यहाँ पे यूनिक सिचुएशन क्या हो रहा था कि एक ट्रायंगल पैटर्न था, एंड इट वाज क्लब्ड विद अ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। दिस इज पर्सनली माय फेवरेट sort of position to be in, triangle pattern with an all time high breakout. तो जैसे ही ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक करेगा, आप वहाँ पे 50-60,000 डाल सकते हो। फिर जब वो रीटेस्ट करेगा, तो आप देखो यहाँ पे उसने रीटेस्ट किया है। कोई भी पैटर्न बिना रीटेस्टिंग के ब्रेकआउट क्लियर नहीं होता। जब तक वो रीटेस्टिंग ना हो, इसका मतलब वो ब्रेकआउट नहीं है। तो वो रीटेस्ट किया, वो आएगा नीचे, उस लेवल को वापस से टेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। अभी आप देखो, ये जब वो ऊपर जाएगा तो वो ट्रेंड में जाएगा, सो वो 20 DMA को फॉलो करके ऊपर जाएगा। सो दीज आर इंक्रीमेंटली, लेट्स से इफ यू वांट टू लोड, देन यू कैन, दिस इज योर पॉइंट टू लोड। या अगर और नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो दिस इज योर पॉइंट, राइट? बट अगर ये ऑरेंज ब्रेक करके नीचे जाने लगता है, देन दैट्स योर पॉइंट टू सेल, राइट? सो मोटा मोटा दैट्स हाउ। एंड फंडामेंटली इफ यू लुक एट महिंद्रा सीआई, वी नो ऑटो सेक्टर में एक रिवाइवल आ रहा है। अभी बिजनेस साइकिल टर्न कर रहा है, पिछले 4-5 साल से टाइप अच्छा नहीं किया है, अभी वो टर्न कर रहा है। एंड वो आपको इसमें ही नहीं, वो आपको बहुत सारी ऑटो कंपनी में दिखेगा। टाटा मोटर्स में दिखेगा, महिंद्रा में दिखेगा, एंसिलरी कंपनी में जैसे फीएम इंडस्ट्रीज हो गया। तो आप देखो, ये फीएम इंडस्ट्रीज का चार्ट है, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। ये देखो फीएम इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है। फीएम इंडस्ट्रीज एंड ऑटो एंसिलरी कंपनी, आप देखो, इन्होंने ये 2 नवंबर 2016 का लेवल वापस से ये टेस्ट कर रहा है स्टॉक। अभी
वो मल्टीपल टाइम्स रीटेस्ट कर चुका है इस लेवल को, एंड यहाँ से very high likely chances of going up from here. There's another company called Lumax, for example. I'll show you Lumax also. You will find this across all the companies जहाँ पे भी cyclical uptrend हो रहा है. तो आप देखो ये 2018 अगस्त 2018 का लेवल है और उसने उसको ब्रेकआउट किया, अभी टेस्टिंग चल रही है, अभी ये सपोर्ट लेवल के ऊपर है, यहाँ से ये ऊपर जा सकता है. सो और देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न आया था. सो दीज आर माय फेवरेट वन, जहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न आता है और उसके साथ एक ऑल टाइम हाई टेस्टिंग होती है. These are situations where in a very short period of time you make like 50-60% returns with, and here you can only make money, and let me repeat, here you can only make money अगर fundamentally, valuation wise, technically, volume wise. अभी आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, ये जब ब्रेकआउट आ रहा है तो आप देखो ये वॉल्यूम कितना है यहाँ पे. तो all of these things have to come in place for you to take this trade. I say this and it has come after a lot of realization कि जब आप मान लो किसी दिन सुबह उठ के बोलते हो कि नहीं चलो आज ट्रेड लेते हैं, वो ट्रेड आपका अच्छा नहीं जाएगा. बस जिस दिन सुबह उठ के मार्केट आपको बोलता है ना कि हाँ अभी ये ट्रेड लो, वो ट्रेड आपका अच्छा जाएगा ही जाएगा. जो मार्केट टेल्स यू when to buy, when to sell, these are indications that you need to take from the market and the movement that the market is doing, having understood the business as well, right? So you have to be very particular कि नहीं मेरे को, I don't want to invest in companies जहाँ पे corporate governance अच्छा नहीं है, जहाँ पे किसी भी तरह का इशू है. We stay away from those companies. बट कंपनीज अच्छी हैं, बिजनेस साइकिल अच्छा चल रहा है. जैसे बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो ऑल दीज बैंकिंग कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल, क्योंकि वहाँ पे साइकिल अच्छा है. द बैंकिंग साइकिल इज स्टार्टिंग टू पिक नाउ, राइट? सो आरबीएल हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, आईडीएफसी हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट हो गया, आप कोई भी बैंक उठा लो, सबके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं. सो वी नो फॉर अ फैक्ट देयर इज अ साइक्लिकल अप ट्रेंड इन द इंडस्ट्री. सेम अप्लाइज टू मेटल्स फॉर एग्जाम्पल. जैसे एक बहुत ही माइक्रो कैप स्टॉक है जिसका नाम है ISMT लिमिटेड. अभी आप देखो वी आर इन अ सिचुएशन जहां पे कल परसों की बात है, लास्ट वीकेंड वी सॉ अ ट्रायंगल ब्रेकआउट. इट केम विद अ वेरी गुड वॉल्यूम. ठीक है, फंडामेंटली आई एम नॉट गेटिंग इन द स्टॉक, अज्यूमिंग कि हमारा फंडामेंटल इस पे क्लियर है एंड वैल्यूएशन वाइज वी आर मच मोर कंफर्टेबल. तो अभी ट्रायंगल ब्रेकआउट आ गया स्टॉक में. अभी आप देखो बहुत क्लियर ट्रायंगल ब्रेकआउट है and it has come with a lot of volume, and अभी ये all time high टेस्ट कर रहा है. तो like I said, these are my favorite trades to make, जहाँ पे कि triangle breakout with all time high volume, all time high. Let me see all time high कितना पुराना है. मैं इसको वीकली पे देखता हूँ. अभी ऑल टाइम हाई आप देखोगे तो ये 2010 का ऑल टाइम हाई है, नवंबर 2010 का. तो when you are in a situation like this, very likely these trades will make a lot of money for you. So यहाँ पे अभी क्या होगा कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर ये इस लेवल को रीटेस्ट करेगा और फिर यहाँ से ये ट्रेंड में जाएगा. दैट इज द मोस्ट लाइकली सिचुएशन पाथ इट विल टेक. सो माई लोडिंग पॉइंट्स आर कि चलो मैं 64-65 रुपीज पे या ऑल टाइम हाई के नीचे कहीं पे मैं एक मेरा बाइंग पॉइंट है जहाँ पे मैं 10-20% ही लोड करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा. फिर जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करेगा तो मैं और 10-20% लगा दूंगा. बट मेजॉरिटी मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो टेस्टिंग के बाद आएगा. सो दैट इज हाउ आई विल लोड माई स्टॉक. सारा का सारा 5 लाख यहाँ पे नहीं डालना है. अगर आप वो गलती करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो ट्रेंड है वो इट विल नॉट पैन आउट द वे इट शुड आइडियली पैन आउट. एंड लुक एट द वॉल्यूम हियर. सो कैन यू सी द वॉल्यूम? So this breakout comes with a lot of volume. So when you see trades like this, all-time high breakout, triangle breakout, very large candle with a very good volume, and then there is retesting. These are sure short ways of making money. मतलब 90% of the time you will make money. I'm not even saying 30-40%. 90% of the time you will make money. But
here again I must tell you that there is no time horizon. तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने 2 महीने में ही बना के देगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये 7-8 महीना भी लगाए, you know. So timing point of view, there is no guarantee. You might have to wait, which is why I'm saying these can be long-term trades also, right? And you should stay the course as long as the stock is in trend after a breakout. You should stay the course. Right? I think I've covered majority of the point that I wanted to cover. If there are any questions, happy to take. I hope this was helpful. So you're saying how can we conclude companies the right valuation stock? See, this is again going back to your industry understanding of the business, the valuation that you're buying it at, the cycle also. So business cycles also matter. If it's a commodity industry, then the cycles matter even more. Steel, paper, cement, be very sure about those cycles. Banking का cycle अच्छा चल रहा है, अभी auto का अच्छा चल रहा है, metals का अच्छा चल रहा है, pharma का अच्छा चल रहा है. ये चार तो I know will do very well for the next 3-4 years. अब इन cycles में अगर आप अच्छी businesses pick कर सकते हो at the right valuation. So for example, not a recommendation, but we've, for example, picked a company called Kaplan Point Laboratories. So this trade has not sort of क्या उसको बोलते हैं, अभी ये चला नहीं है, अभी ये हमारे ट्रैकिंग मोड में है, और हम इस ट्रेड को ट्रैक क्यों कर रहे हैं, आई विल टेल यू. So pharma over the last 6-7 years has not done well because of US में generic commodities का pressure, pricing erosion हुआ है, all of that. I mean, if you have that sort of fundamental ज्ञान on the industry, we come from that background, so we typically look at companies from that background only. So we are not technical guys, we are more like fundamental guys with a knack for technical. So Kaplan Point Laboratories is a very, very special pharma company, I would say, because fundamentally it does like 30% gross margins. उसका non-regulated markets का business बहुत अच्छा है, branded generics बहुत अच्छा करता है, उसका share of branded generics, which is the high profit margin business, is also very high. So these are the good things on the business. The promoter is good, growing fast, and after all that, the stock is available at a PE of 16. So Kaplan Point Laboratory is available at a PE of 15.9. For the last 5-year ROC is 35-36. So a business like this, I'm not worried about the fundamentals at all, and valuation gives me a lot of comfort. And what I see is that it is now getting into a triangular formation. So अभी तक इसने breakout दिया नहीं है, but ये उस formation में है. And साथ साथ ये क्या कर रहा है, ये अपने 2017 के एक लेवल को टेस्ट कर रहा है, जो कि 5 साल पुराना लेवल है. तो these are the situations I love to be in. अभी ये this trade has not given me a breakout, and I have put in only a tracking position. So मैंने थोड़ा सा 10-20-30 हज़ार रुपया डाल के अभी मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ. कैश में बैठा हूँ ये सोच के कि ये स्टॉक मेरे को ब्रेकआउट देगा, जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा उस दिन मैं लोड करूंगा, एंड देन उसके बाद से जो 3-4 महीने होंगे उसमें मैं इस स्टॉक में बहुत सारे पैसे बनाने वाला. So that's my thesis here. I mean, I hope you sort of like this session. This is not for intraday short term, but yeah, for a long-term investor who want to sort of make good returns by taking some concentrated bets. Now, these are not bets जहाँ पे you play small. If you are getting into such situations where everything is sort of coming together, aligning perfectly, then you have to sort of put in a larger trade so that उसका risk reward भी वैसा aligned. No, sorry, I don't do intraday. We only do long term. I can definitely tell you कि जहाँ पे अभी see, I don't know, it's a 3-month trade, 6-month trade, 1-year trade, or a 3-year trade. But as you would have seen, typically जब हम breakout में invest करते हैं तो breakout 3 से 6 महीने का होता है, या 1 से 6 महीने का भी होता है breakout, anywhere from 1 to 6. तो like you said, it becomes an intra-month या short term. There's no minimum return target, but typically when you are sort of getting into a breakout trade, it's like a 40-50% trade in 5 to 6 months. And
अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने कहीं पे भी स्टॉप लॉस की बात नहीं की है, क्योंकि हम स्टॉप लॉस में बिलीव नहीं करते। तो अगर मान लो कि यहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं आता है एंड मैं इस स्टॉक में अटक जाता हूँ, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल होल्डिंग दिस पोजीशन इवन फॉर द नेक्स्ट 3 years, राइट? मे बी 3 साल के बाद ब्रेकआउट आएगा, अभी ब्रेकआउट नहीं आएगा। सो आई लुक एट इट दैट वे कि अगर मेरा ब्रेकआउट नहीं आया तो एम आई कंफर्टेबल होल्डिंग कैपिटल पॉइंट्स एट 16 का पी, एंड आई एम very comfortable holding capital point at 16 ka. So I'm not worried if it goes into a 2 month, 3 month correction, 1 year correction. I will definitely average my capital point का position basis the charts. तो अगर चार्ट के सपोर्ट लेवल पे जाके स्टॉक बैठेगा, वहां से सपोर्ट लेगा, तो मैं वहां पे अपने कैपिटल पॉइंट को एवरेज करूंगा, एंड आई वेट फॉर द नेक्स्ट ब्रेकआउट which can be anywhere from 1 year to 3 year, I don't know. But that's where I am more like a fundamental, because I do not have any stop loss on my orders, because I am very comfortable holding them at the valuation that I'm buying them. If that breakout happens for me, 90% of the time, I'm very lucky. I make 40-50% returns in 2 months. If it doesn't happen for me, then I am very comfortable holding that stock also. What traders do is they'll probably book a 20, 30, 40K का loss and they'll get out. कि ठीक है, चलो अपना ये ट्रेड नहीं चला, 40-50 हज़ार जो भी है, 10-20 हज़ार जो भी लॉस है, बुक करके बाहर निकलता है, लेट्स रोटेट आवर मनी, राइट? एंड दैट्स अ फाइन थिंग. आई मीन, if you're looking at it as a trader, do it, no problems. But just saying that we don't look at it that way. Because I'm also taking a very fundamental view on the stock, so I don't have any problem holding it. And again, these are not positions where where we'll do like महीने के 4 ट्रेड, नहीं, ऐसा नहीं होगा. मोस्ट लाइकली आपके टाइम पे, फॉर एग्जांपल in my portfolio at this point of time, I only have 3 positions, and I am heavily invested in all the 3 positions, right? So I have more than 5 lakhs in every position that I've taken, and I have just 3 positions. Everything else is tracking. So there will be other 5-6 positions that I'm tracking, जहाँ पे मैंने 5-10 हज़ार रुपए लगा के रखा है. But I wouldn't call them like my real position. My real positions are only 3. जहाँ पे I know there's a breakout, I like the fundamental, I like the valuation, I like the industry, I like the cycle, and I like where we are in that cycle. So all of these things give me a lot of comfort, and that gives me the conviction to put in 5-6 lakhs in that time. And again, like I said, not all of that money goes in one go. It will go in stages. As and when my levels are broken, I will then keep increasing my position, and I'm very comfortable buying as the stock is growing up versus when the stock is going down. In fact, I never like to buy when the stock is going down, unless it's like bottomed out and वहां से फिर वापस से वो ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है, तब तक मैं स्टॉक को कभी टच नहीं करूँ. You can unmute yourself and ask the question. I think if you need not type, you can unmute it. We do, like I said, we do advise. So we are SEBI registered advisors. We have, in fact, small case also. So our small case is called WealthCulture.smallcase.com. We have 2 portfolios running here. This one we've been slightly sort of beaten down. When we started, market corrected significantly. तो थोड़ा यहाँ ये जब हमने लगाया तो market upturn में था. So that's the difference between these 2. But yeah, all our clients are in positive. We are sort of doing well. Our trades are working out well, and hopefully this is a very short term to analyze this, but I think with the teams, we should be in a very comfortable seat here. Any other questions, or we can end this session? Okay. Thanks a lot, everyone, for joining. Yeah, please, sir. Yeah, Ujjwal. So Ujjwal, just wanted to understand, this is just like the subscription to your essentially website or your offering, or
I mean, you also have an investment portal in that sense. I mean, is it like an investment advice for which we need to subscribe, or you Yeah, also yeah. do investment on behalf of customers? No, so our license is an RA license. So we do it two ways. Either we do it through our small case. Small case, as you know, is a basket, right? So we've created a basket of stocks to invest. You can subscribe to the baskets using small case. Offline, may we do one-on-one advisory, where I will come and tell you, that please buy this, please sell that, and that's where we do a lot of our breakout also. Small case में क्या है ना, breakout करना easy नहीं है. Small case जिस system से काम करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट इन्वेस्टिंग करना उतना आसान नहीं है. हालांकि हमारे स्मॉल केस पोर्टफोलियोज में तीन चार मतलब जो हमारे ब्रेकआउट आइडियाज हैं वो भी रहते हैं. बट अगेन वहाँ पे ऐसे 7-8 लॉन्ग टर्म आइडियाज भी रहते हैं जहाँ पे कि we are not looking at it from a breakout point of view, but more like a long term theme, because fundamental angle तो हमारा रहता ही है. बट हाँ, at any point of time जो हमारे 3-4 ब्रेकआउट होते हैं और वहाँ पे जो पोजीशन साइजिंग करनी होती है, किस टाइम पे यू रियली हैव टू गो बिग ऑन योर ट्रेड्स, व्हेन डू यू सॉर्ट ऑफ हैव टू ट्रैप, वो चीज़ें हम ज़्यादा अच्छा अपने ऑफलाइन क्लाइंट्स के साथ ही कर पाते हैं, जो कि वन ऑन वन होता है. अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट होता है वो तो क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में ही होता है. वी डोंट हैव द लाइसेंस टू Okay, टेक अदर पीपल्स मनी. It will all happen in your demat account and we'll just tell you when to buy and sell. understood, understood. So that was one question. And secondly, any literature that you would like to recommend to all of us to read technical investing, either it's a online PDF or even a book where you think we can. So this was a wonderful session, Ujjwal, honestly, and thanks to you for taking out such kind of time. I mean, it's very easy to request on WhatsApp, but you have taken a lot of time for all of us. Honestly, yes, try to understand it, but everything does not sink in a single session. So from that perspective, No, so what I mean, this is the right time I would say. We are starting a sort of course this month itself, okay, where we are calling it a mentoring session. So we want to try it. We want to give it a slightly different try. What we are trying to do is basically fundamental plus technical. So, okay, and it will be a 3-month sort of course with a 9-month sort of engagement. okay, And which is why we're calling it mentoring, because we want to do it over a 1-year period, where first 3 months will be more like Gyan and 9 months will be actual practice, where we will help you take those trades. understood. We'll help you internalize whatever sort of कि फंडामेंटली कैसे देखे, वैल्यूएशन कैसे देखे, टेक्निकली कैसे देखे, एंड फाइनली जब ये सारी चीजें एक साथ आएंगी तो आप वो ट्रेड आइडेंटिफाई करके उसमें अपना पोजीशन कैसे बनाओगे. तो ये जो पूरी चीजें एक सेशन में कवर करना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हम इसको एक मेंटरिंग प्रोग्राम बना रहे हैं, जो हम 1 साल का मेंटरिंग प्रोग्राम होगा. फर्स्ट 3 months विल बी सम सेशंस लाइक दीज, एंड रेस्ट का 9 months विल बी जस्ट you and me discussing कि अच्छा आप बताओ आपको कौन सा ट्रेड अच्छा लग रहा है, and then we'll give you feedback कि अच्छा ठीक है, fundamentally, technically, valuation wise, everything is now looking in place. And then when you start to take those trades now, that is when you start to build your conviction, and hopefully in a year's time we take you to a position where you don't have to go to any other advisor. Understood. So how do we, or you will share some So details? I'll share the details with you one-on-one. Sure. On your WhatsApp number, and you let me know if that is of interest to you. We are actually looking to start that this month itself. I'll be highly interested, but the only limitation is because as you are aware, I mean, all of us have a full-time job. So if we are doing this on weekends actually, which is why I'll it takes be highly interested. We are doing this session on weekends, Saturdays and Sundays. It will be like a 18-20 session ka course. And then उसके बाद तो pure live sessions, pure practicals. उसके बाद every 2 weeks we'll have a one-on-one discussion कि आपको कौन से ट्रेड अच्छे लग रहे हैं, क्या आपका फंडामेंटल है, क्या आपका टेक्निकल है, है ना. And then we sort of try and experiment with these trades. थोड़ा पैसा लगा के let's see कि breakout हमारे successful है कि नहीं, what's the rate of our success. And I think over a period of 1 month, because of this engagement, we'll be at a much better place in terms of taking these calls. That's what our idea is. काफी लोग they do these one day sessions, workshops. A lot of people who have a lot of content online also, but we thought कि
it doesn't justify the kind of effort that is required to internalize all of this, right? And Right. which is why we said, let's do a 1 month mentoring, and we're only looking to do 5 people now. We already have 3. We have 2 more seats left. So we are just 5 people, in this session. We're not looking to make it like a lot of people. That's it. So Ujjwal will be looking forward. You let me know how to Done. I'll register, how to. I'll share the details. Yeah. Yeah. Okay. Sure. Cool. Thanks a lot. Thanks. Ujjwal, Yeah. hi, Kaustubh here. Yeah. Yeah, hi, it was a very informative session. Thanks for taking time for us. Just 2 questions. One, you told us about the advisory. So if you could just tell me, or just tell me one-to-one or WhatsApp also, how does that work, or what are the? So yeah, we charge like any other research analyst. Hamara, our all-time job is to do research, pick trades, find, I think I'll connect to you one-on-one, Kaustubh. Yeah, sure. Basically, it's like the traditional advisory where we tell you what to buy and sell at what point of time, and all you have to do is just execute that in your demat. Yeah, sure. And also regarding that course, the 3-month course also, if you could also share those details. I will send the details with you. Yes, I will do that. Thanks for your advice. Yeah. Okay. Cool. Thanks a lot for sparing time. I think I took more than what I had asked for, but thanks for staying all this while. And look forward to engage more and help you guys make money for you. Yeah. Thank you.